Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 6. This is your grammar book and here the cover page of the book is given English Grammar plus Skills Unleashed workbook. So children, today we are going to start with a new chapter and this is chapter number 13 of your book and the name of the chapter is Continuous Tense. So let's start with the chapter. The continuous tense shows an action that is done in continuation. So continuous tense ऐसे action के बारे में बताता है जो continuation में चला आ रहा है. It may be in the past, present or future form. So ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, past form, present form और future form. Now look at the chart below. Here some tenses are given, then the first person, second person and the third person. In the tense category we can see यहाँ पे present tense लिखा है, past continuous tense लिखा और future continuous tense लिखे हुए हैं. So in the case of present continuous tense, पहले हम पढ़ेंगे present continuous tense. I am eating rice and we are eating rice. In the second person, you are eating rice. And in the third person, she is eating rice, they are eating rice. So, in the present continuous tense, we use is MR and then the first form of verb is used here and then ing is used. Next is past continuous tense. I was eating rice in the first person and we were eating rice. Next, in the second person, you were eating rice. Third person, she was eating rice and they were eating rice. So, in the past tense, we use was plus verb and the verb and then the ing word. Next is future continuous. So, in this, let's see, in the first person, I shall be eating rice and we shall be eating rice. In the second person, you will be eating rice. And in the third person, she will be eating rice and they will be eating rice. So when we talk about the future continuous tense, we use shall be, then the verb and then ing. Or will be and then the verb or ing. The first row, all the verbs talk about the present. So जो पहली रो है इसमें सब present के बारे में बात कर रहे हैं. In the second row, they talk about past. Second row में सब बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, past की बात कर रहे हैं. While in the third row, the verbs indicate the future. लेकिन जो third row है इसमें सब future के बारे में बात कर रहे हैं. Now, let's see what is present continuous tense. Structure of sentences in present continuous tense. So जब present continuous tense को हम लिखते हैं तो कैसे उसको हमें form करना होता है, let's see. First is for affirmative sentences, means positive sentences के लिए हम क्या लिखते हैं, and the second one is for negative sentences. So here we write down the subject. सबसे पहले subject आता है, फिर is, are, am. अगर subject singular है तो is आएगा, अगर plural है तो are आएगा और I है तो am आएगा. So we use is, am, are plus first form of the verb. Verb की जो first form है वो लिखते हैं and then we add ing. ing को हम plus कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया. अब यू मीन्स मल्टीपल पर्सन कैन बी, सो यू के साथ हम आर लगाते हैं एंड हियर वी हैव रिटन द फर्स्ट फॉर्म है बेक और बेक में हमने लगा दिया ing तो हो गया बेकिंग. सो यू आर बेकिंग अ केक. सिमिलरली शी इज डांसिंग ऑन द स्टेज एंड आई एम ईटिंग अ मैंगो. सो दिस इज फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस subject is used, then we add is, am, are. अब is, am, are के बाद हमें यहाँ पे not का use करना है, plus first form of the verb plus ing is used. So I am not playing football, Dave is not reading the book and they are not flying kites. So अब जो है negative sentence में हमने convert कर दिया है इन्हें. For interrogative sentence, अब interrogative sentences मीन जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहा है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो भी हमारे is, am, are होते हैं उन्हें हमें स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है एंड देन वी राइट डाउन द सब्जेक्ट. सो पहले हमने is, am, are लिखना है
plus subject plus first form of the verb and then ing is used. Is Kishan talking to his friends? Am I speaking too fast? And are they running for their life? So यहाँ पे हम देख सकते हैं is am are starting में है, then उसके बाद जो हमने subject लिखा है and then the first form is talk, speak and run is used और उसमें हमने लगा दिया है ing, तो बन गया talking, speaking and run. Uses of present continuous tense. Present continuous tense के क्या क्या uses हैं? To describe an action that is going on at the time of speaking. So ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो चल रहा है, जब हम बोल रहे हैं उस समय वो काम चल रहा है. So for that we use present continuous tense. The sage is meditating. Manya is washing her hair. A nightingale is singing in the woods. So sage is meditating का मतलब है कि sage अभी भी, जो पुजारी अभी भी मेडिटेट कर रहा है, मीन्स अभी भी वो ध्यान लगा के बैठा हुआ है. मान्या इज वॉशिंग हर हेयर, अभी उसके बाल जो है वो वॉश करे, भी वो काम खत्म नहीं हुआ है. एंड सिमिलरली द नाइटिंगेल इज सिंगिंग इन द वुड्स. नाइटिंगेल जो है फॉरेस्ट में गाना गा रही है, उसका गाना खत्म नहीं हुआ. टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट मे नॉट बी टेकिंग प्लेस. सो ऐसे एक्शन को भी डिस्क्राइब करना जो नहीं हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट हैज रिलेवेंस टू द प्रेजेंस. सो ऐसा काम जो अभी तो नहीं हो रहा है लेकिन उसका जो है प्रेजेंस से कुछ नाता है, ये ऐसे वर्ड्स, ऐसे काम के लिए भी हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिहाना इज वर्किंग इन बेंगलुरु दीज डेज. सो वो जो है वहां पे काम करती है, अभी नहीं कर रही है, अभी वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो कहाँ काम करती है, वो बेंगलुरु में काम करती है. ही इज लर्निंग फ्रेंच, वो फ्रेंच पढ़ रहा है, अभी नहीं गया है वो क्लास में. शिवम इज अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, शिवम डेली क्लासेस ले रहा है. टू डिनोट एन एक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर. सो ऐसा एक्शन जो आगे जाके होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक. मैं न्यूयॉर्क जाने वाला हूँ अगले हफ्ते, मीन्स ये काम होने वाला है फ्यूचर में. वी आर गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट मैच दिस इवनिंग. आज शाम को हम जाने वाले हैं. वेट, वी आर रीचिंग इन अ फ्यू मिनट्स, हम आने वाले हैं. सो ये सारे जो वर्क यहाँ पे दिए गए ये अभी फ्यूचर में होने वाला है. एंड फॉर दिस ऑल्सो वी हैव यूज्ड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब अ कॉन्टिन्यूइंग सीरीज ऑफ एक्शन. सो ऐसे एक्शन को भी डिस्क्राइब करना जो कंटिन्यूएशन में चल रही है, with words like forever, always, constantly, etc. So इन words को भी यहाँ पे use किया जा रहा है. For example, she is forever complaining about how unlucky she is. So यहाँ पे हमने क्या use किया, forever word use किया. और कहाँ use किया, हमारे जो main verb हैं और जो helping verb है उन दोनों के बीच में. Mukti is always eating unhealthy snacks and her parents are constantly telling her to work hard. So these are the examples of the words that goes in continuation of a action. Now fill in the blanks by using the verbs in simple present and present continuous tense to complete the sentence. So इसमें हमें simple present tense भी हो सकता है, present continuous tense भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. We have to fill in the blanks. The verbs to be used are given in the bracket. So bracket में words दिए उनको use करना है. Every Monday, Ashok dashes kids to badminton practice. So हर मंडे को अशोक drives his kids to badminton practice. So हर मंडे को वो जाता है, अभी जा नहीं रहा है. So here we have to write drives, drives. John dash a book right now. अब John जो है अभी ये काम कर रहा है. So here we are going to write John is reading a book right now. So यहाँ पे is आएगा. So children, like this you have to do the rest of the questions. Next comes past continuous tense. क्या होता है past continuous tense? For affirmative sentence के लिए क्या use करते हैं, and for negative and also for interrogative sentences. For affirmative sentences we use subject. Subject के साथ हम was या फिर were लगाते हैं. Was with singular and were with plural. And then first form of verb use करते हैं और उसमें ing had कर देते हैं. For example, the mason was building the house.
मैसन बिल्डिंग हाउस को बना रहा था, अब यहाँ पे था आ जाएगा. द गर्ल्स वर टॉकिंग इन द पार्क, गर्ल्स बात कर रही थी. द टीचर्स वर प्रिपेयरिंग अ टेस्ट, टीचर टेस्ट को प्रिपेयर कर रही थी. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, अब नेगेटिव में भी हमें सेम चीज करना जो हमने प्रेजेंट में किया था. वॉज और वर्ब के बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है. So Keshav was not cheating in the examination and we were not sleeping at 6 p.m. yesterday. They were not studying. For interrogative sentences, अब interrogative sentence के लिए हम क्या करना है, was वर्ब को starting में ले जाना है, sentence के starting में लगाना है. So was said listening to what I was saying. और was के बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, देन ing. Were you eating mangoes and were they going for a picnic? So by this we have completed the interrogative sentences. Uses of past continuous tense, क्या क्या uses हैं इनके. The past continuous tense is used to describe an action going on at the point or time or over a period of time in the past. So ये एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहा है जो उस टाइम पे चल रहा था. The time of action may or may not be indicated. So जो टाइम है वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है कि किस टाइम पे ये काम चल रहा है, बस ये काम चल रहा था ये पता है हमें. Now he was playing video games all evening. पूरी दोपहर बैठ के वो वीडियो गेम खेल रहा था. The police officers were patrolling the whole day. So पुलिस ऑफिसर जो है पूरे दिन पेट्रोल पे थे, वो पेट्रोलिंग कर रहे थे. To denote an action that was in progress when another action took place. So action, ऐसे एक्शन के बारे में बताना जो प्रोग्रेस में था जब दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया. Mother was sleeping when the bell rang. So बेल के बजने का एक काम हो रहा है, लेकिन उस समय क्या हो रहा था, उस समय मदर सो रही थी. फिर क्या हुआ इसमें कि दो एक्शंस की बात की जा रही है. सो ये क्या डिनोट करता है, डिनोट्स द एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस. एक एक्शन चल रहा था, एक काम चल रहा था, दूसरा काम भी हो गया. व्हेन आई कॉल्ड हिम दिस मॉर्निंग ही वाज टेकिंग अ बाथ. तो जब मैंने उसे कॉल किया, तो कॉल करने का काम हो रहा है, तो उस समय वो क्या कर रहा था, ही वाज टेकिंग अ बाथ, वो नहा रहा था. टू डिस्क्राइब persistent habits in the past. So बीती हुई हैबिट्स के बारे में भी बताना भी इसमें किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस with words like always, continually, etc. Miti was always reading. Last year he was always coming to me for money. Rahim was continually arguing about money. So here we have used the persistent habits are being talked about. Now fill in the blanks with the past continuous form of the verbs given in the bracket. So bracket में जो word है उन्हें use करना है in the past continuous form. My mother, अब mother one है तो mother के साथ आएगा was, telling me to tidy my room. Next is they were playing cricket in the field. So children, rest of the questions are your homework. You have to do on your own. Now next C exercises, rewrite the following sentences into their negative forms. So इन sentences को negative form में करना है. दिया हुआ है first sentence, the birds were chirping in the garden. So word chirping के बीच में हमें क्या लगाना है, not लगाना है. So birds were not chirping in the garden. The babies were not playing quietly. Rest questions you have to do on your own. Now the next topic is future continuous tense. Structure of sentence in future continuous tense. How the sentence is made in future continuous tense. For affirmative sentences, subject and then will be or shall be is used with the first form of verb and ing. I will be waiting for you at the airport. She will be studying for a test. We will be spending our summer vacations in Japan. Next comes for negative sentences. Negative sentence में हम क्या करते हैं, not का use लगा देते, not को हम लगा देते हैं. For example, subject plus will not be or shall not be and the first form of verb and then ing is to be included.
she will not be driving that late. They will not be writing their assignments, and man will not be hiding from his mother. So these are the examples of negative sentences. Next comes the interrogative sentences. आप future continuous tense में आप interrogative sentence कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं करना है, will shall को हमें starting में लगा देना है, उसके बाद हमें subject लगाना है, उसके बाद हमें be लगाना है, क्योंकि हमने will के साथ be या shall के बाद be यूज किया है, तो will come in the starting, then subject will come, और उसके बाद हमें be लगाना है and the first form of the verb का first form लिखना है and then उसमें हमें ing लगा देना है. For example, will he be painting the wall yellow? Will the gatekeeper be closing the door? Will they be paying? So here we have formed the interrogative sentences. Next is uses of future continuous tense. अब future continuous tense को कैसे use करना है? Let's see. To denote an action that will be in progress and sometime in the future. So ऐसे action के बारे में बताता है जो काम जो है future तक चलता रहेगा, future में चलता रहेगा. The dog will be sleeping at that time. उस समय dog सो रहा होगा. Neha will be studying when I reach home. Neha पढ़ रही होगी जब मैं घर पहुंचूंगा. To denote future events that are planned. So कुछ ऐसे future events के बारे में बताना जो पहले से plan हो. For example, the committee will be declaring the result next week. So पता है कि committee जो है result देगी. कब देगी? Next week देगी. So here we have used future continuous tense. I will be staying here till Saturday. मैं यहाँ Saturday तक. Now fill in the blanks with the future continuous form of the verbs given in the bracket. So यहाँ पे हमें fill up करने हैं. First one is it dash heavily in Mumbai next month. So rain is given. It will be raining heavily in Mumbai next month. And he will be writing a poem. So these are the answers. Rest you have to do on your own. Now rewrite the following sentences in their future continuous form. Who will go to school with you tomorrow? So इन्हें क्या करना है? इस क्वेश्चन को पढ़ना है और उनके आंसर्स को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लिखना है. So पहला क्वेश्चन है who will go to school with you tomorrow? So अब हम यहाँ पे will के साथ क्या लगा देंगे? be लगा देंगे. So who will be going with you to school tomorrow? So who will be going to school with you tomorrow? I am not buying a book. So am की जगह क्या लग जाएगा? will be. So I will not be buying. will लगा देंगे बस और am को वैसे छोड़ देंगे, am को हटा देंगे. I will not be, not के बाद be लगाएंगे. be buying a book. So we have done 2 and the rest questions are your homework. Now fill in the blanks according to the instructions in the bracket. So bracket में कुछ instructions दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और इनके according हमें इन्हें fill करना है. So my uncle dash in Jaipur from 2001 to 2007. Here we have to write down the past continuous of live. Live का past continuous, live का past continuous tense लिखना. So live का past continuous tense क्या होगा? My uncle was living in Jaipur from 2001 to 2007. What dash you for? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखना है लुक का. सो क्या हो जाएगा? what अब you लिखा हुआ है तो you के साथ हम क्या लगाते हैं? are. So what are you looking for? So we have done 2 children and the rest is your homework you have to do on your own. Now identify the tense in these sentences. So in sentences में हमें tense को पहचानना है. It could be present, past or future and it could be simple or continuous. सो टेंस जो है सिंपल भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट या फिर फ्यूचर भी हो सकता है. तो हमें उन्हें ढूंढना है, इन्हें अंडरलाइन कर लो चाहे आप सर्कल कर लो. माई सिस्टर विल बी परफॉर्मिंग इन टुमारोज कॉन्सर्ट. सो यहाँ पे विल बी परफॉर्मिंग यूज हो रहा है, इसका मतलब दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो विल बी परफॉर्मिंग को हम अंडरलाइन करेंगे. द ट्रेन इज अराइविंग विद इन 5 minutes. सो इज अराइविंग को हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे and this is present continuous
tense. So children, like we have done the 2 rest questions you have to do on your own. Now rewrite these sentences using the correct tense of the highlighted verbs as indicated or instructed. So यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं, उन्हें जो है rewrite करना है and जो ये form कह रहा है इस form में आपको इसे लिखना है. I hardly sleep because the dogs bark all night. So sleep को हमें simple past में करना है, तो हम sleep का हो जाएगा slept. I hardly slept, S-L-E-P-T, slept because the dogs, bark को हमें past continuous में करना है, तो हम कह देंगे dogs, बहुत सारे dogs हैं तो were, W-E-R-E, were, और bark बन जाएगा barking. So I hardly slept because the dogs were barking all night. Similarly, the second one, I will pay, future continuous में करने से I will be paying the school fee next week. So children, 2 we have done and the rest questions are your homework you have to do on your own. So we have completed this chapter and it was a very good and interesting chapter, and I hope that you have understood it and you have to complete the exercises that is given to you here in this book. And also you can find out some more exercises, and if you have any query you can ask me in the comments. I'll be waiting for you with a new video. Until then, stay ready.